ऊपर से कुछ फरिश्ते आते हैं जो इस दुनिया में घूमते हैं. And in some cases, people do Allah Allah, and at that time there are angels who roam around in the world, and then they come down upon that person. तो जहाँ अल्लाह अल्लाह हो रही है तो वहाँ भी वो भी पहुँच जाते हैं ना. Where in a community or in a gathering, the name Allah is being chanted, those then come upon that community or gathering. और तुम एक दिन देख लोगे जब अल्लाह अल्लाह में बैठोगे तो तुम्हें अल्लाह अल्लाह की बहुत सी आवाज़ें वहाँ से आएंगी. इतने बंदे लोग नहीं बैठे होंगे. Then one day you will actually hear and notice that there may be only a few of you sitting doing Allah Allah, but you'll hear many many voices, and then you'll say there are not many people here, but where are all these voices coming from? फिर वो फरिश्ते जब ऊपर जाते हैं तो अल्लाह उनसे पूछता है कि तुमने क्या देखा. वो कहते हैं अल्लाह कुछ बंदे थे जो बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे. Then the angels return up, and then God asks them, "Oh angels, what did you see?" And the angels reply, "Oh God, we saw some people were sitting and chanting your name, Allah Allah." फिर अल्लाह कहता कुआ रहना मैंने उनको बख्श दिया. Then God says to the angels that you bear witness that I have forgiven them. वो कहते हैं एक आदमी कोने पे खड़ा सुन रहा था उसको भी बख्श दिया. Then the angels say, "Oh God, there was one person in that gathering who was standing at one corner only listening." Then God says, "I've forgiven him also." बहुत से लोग इस चीज से बख्शे भी जाते हैं ना. Because many people achieve salvation and forgiveness in this way. इसलिए वो लोग इकट्ठे होकर बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं. This is why people get together in a gathering and then say Allah Allah. और एक और वाक्य, एक लड़का था एक मोहल्ले में, उसने लड़की देख ली, उसको चक्कर लगाना शुरू कर दिया. There is another tale that will relate to you, that there was a boy and he saw a girl in this village and he started to walk around that place. तो लड़की समझ गई तो उसने कहा बात ये तू यहाँ क्यों घूमता. उसने कहा मैं तुझे चाहता हूँ. The girl understood this and she said, "Why do you come to this place often?" And the boy said, "Because I desire you." उसने कहा मैं इस तरह तुझे मिल नहीं सकती. एक तरीका है तू मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दा, तो मैं घर वालों को कहूँगी कि अल्लाह वाला, तो मैं तुझे रोटी देने आ जाया करूँगी या किसी बहाने मिलने आ जाया करूँगी. She said, "There is one way that this could be achieved, that we could meet, that you go into the mosque and start to pray, and then I will tell my family that there's a holy man in the mosque and a man of God, and I must go to him to take some bread to him." तो स्टार्ट अल्लाह अल्लाह pray नहीं, स्टार्ट अल्लाह अल्लाह. And she said to him that go to the mosque and say Allah Allah, chant the name. तो उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू, उसकी मस्ती में झूमना शुरू हो गया ना. And then the boy actually went to the mosque and started to do Allah Allah, and he became intoxicated and started to enjoy it and feel the pleasure of chanting. वो मस्जिद वाले उसको खाना वाना दे देते कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है. The people of the mosque used to give him some food because they said, "Is somebody doing Allah Allah?" कोई 15 दिन के बाद उस लड़की को याद आया कि चलो जाकर देखते हैं ना वो क्या कर रहा है भला. And after about 15 days, the girl remembered that I said this thing to this boy and he was in the mosque. Let's go and see what he's doing. जब वो गई तो वो देखे अल्लाह अल्लाह में वो झूम रहा था. And then when she went to the mosque, she saw that he was actually intoxicated and saying Allah Allah. उसने फिर उसको हलाया, पहले आवाज दी, वो नहीं बोला, फिर उसको हलाया, फिर उसने ऊपर उठ के देखा, पूछा तू कौन है. And then what she did, she first called him, but he didn't hear nothing. Then she actually shook him, and then he raised his head and looked at the girl and he said, "Who are you?" मैं वही हूँ जिसने तुझको यहाँ अल्लाह में लगाया. And then she said, "I am that girl that asked you to do this Allah Allah." उसने कहा अब तू जा अपना काम कर दे, अब मुझे अल्लाह करने दे. And then the boy said to the girl that now you go and do your business, just let me do Allah Allah. बहुत लोग ऐसी झूठी भी अल्लाह अल्लाह करते हैं ना, तो उनमें अल्लाह अल्लाह अंदर चला जाता है. Some occasions, some people do Allah Allah without sincerity and without truth, but even it still affects them and it goes inside them.